दिल्ली रे रोर मचा मचा दिया रोर, जीत गई आज। कुशाग्र असवानी तो खुश है, दिख रहा है उसके चेहरे से। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द सुपर ओवर फर्स्ट, क्योंकि रिसेंट रिसेंट अभी मैच खत्म हुआ है, तो सुपर ओवर से चालू करते हैं। कुशाग्र, गेम शुड हैव गॉन टू द सुपर ओवर। बिल्कुल भी नहीं भाई, वहां तक मैं खुद बोल रहा हूँ एज अ डीसी फैन। आरआर के लिए बहुत इजी विन था ये। दे हैव बॉटल्ड दिस गेम सिमिलरली हाउ डीसी बॉटल्ड द लास्ट गेम अगेंस्ट एमआई। इट वाज एन यार, इफ इजी यू विन कैन फॉर नॉट आरआर। स्कोर 9 runs in the last over, then I mean, what's the point? And you had so many wickets in hand. बट देन एट द सेम टाइम आई बिलीव We स्टार्क को उतना क्रेडिट मिलना चाहिए फॉर bowling those यॉर्कर्स। एवरी बॉल वाज अ यॉर्कर। इट रिमाइंडेड मी ऑफ मोहम्मद शमीज लास्ट ओवर अगेंस्ट एमआई। वो भी सुपर ओवर तक गया था and उसने सुपर ओवर में भी सारे यॉर्कर्स डाले थे। सो and Punjab went to win on that game. क्रेजी बट बॉलिंग, क्रेजी भाई बॉलिंग। भाई क्या व्हाट इज द कर्स विद फिरोज शाह कोटला दिस ईयर एंड रनआउट्स? भाई लास्ट मैच भी 3 रनआउट, ये सुपर ओवर में भी 2 रनआउट, पर क्या चल रहा है? ये आज करुण नहीं बट नायर भी कंसिस्टेंसी जीरो नमन, का पे रन सिस्टम आउट हो हुआ। गया। हाँ करुण नायर तो, बट नमन में था, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? लाइक वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए था। आई बट मीन, इवन इन द फर्स्ट इनिंग्स आई थिंक दे हैड द मैच राजस्थान। जिस हिसाब से चल रहा था, अक्षर पटेल ने पूरा मोमेंटम चेंज कर दिया वो 20 ओवर के रन के ओवर के साथ, एंड देन दे वेंट टू 190। फिर अच्छा पावर प्ले अच्छा जा रहा था राजस्थान का। सडनली दे बॉटल्ड द चेज, यशस्वी जायसवाल आउट हो गया। देन समवेयर फ्रॉम एनीवेयर नितिश राणा इज कमिंग एंड स्कोरिंग। वो एजेस में रन जा रहे हैं, ये रन आ रहे हैं। और सो इट वाज एब्स एंड फ्लो काफी थे, बट आई वुड से इन टर्म्स ऑफ कंपोजर दिल्ली वाज द बेटर टीम, दे डिजर्व टू विन। और मिचेल स्टार्क ने जो कंपोजर के साथ बॉलिंग करी है डेथ में, जो नॉर्कर्स यॉर्कर्स उन्होंने नेल किए, बॉल भी काफी रिवर्स हो रहा था, हमने देखा। ड्राई बॉल था, रिवर्स भी हो रहा था काफी हद तक। और ऑल इन ऑल बहुत अच्छा मैच था, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुपर ओवर तक जाएगा। I'll just come to the hindsight now. Looking back at this, there are two key moments. One in the first innings and the other in the second innings. Which of that you think had the bigger impact? Was it the last over by Sandeep Sharma in the first innings? Or do you think it was Nitish Rana's wicket that gave away the momentum? इट वाज सेंडिंग पान पराग एट नंबर 3। उसको साले को स्पिन खेलना आ नहीं रहा। वो कुलदीप को बाय द सरफेस रीड करने का ट्राई कर रहा था। एक मिस हुआ एज तो स्वीप मार के 4 ले लिया। अगले ओवर में जैसे अक्षर पटेल आया, बॉल टर्न किया आउट। अक्षर पटेल तो बॉल बॉल टर्न भी नहीं करते, नॉट नॉट नोन फॉर टर्निंग द बॉल। इज जस्ट नोन फॉर हिज पेस डिसेप्शन। और वो आर्म बॉल और स्ट्रेट होता है बस, उसमें आउट हुआ है भाई। No, but तो आई turning point in the match is what I wanted to know from you. Ki where do you think that Rajasthan, gave away? Or where do you think थिंक Delhi capitalized? टर्निंग पॉइंट कुड बी संजू सैमसन्स इंजरी, because Yeah. they were going all guns blazing in the power plan. Had he not been injured, तो शायद वो जो पावर कुलदीप आया था bowling करने, he would have tonked a couple of sixes of Kuldeep and put him off his length, तो उसकी वजह से पूरा चेंज हो सकता था, but obviously फिर पूरा अलग चला गया। So that injury was the turning point for me. What I about you, would Kushagra? say Nitish Rana ka wicket was a turning point because they were cruising until he got out, and it would have been a very easy win for Rajasthan despite Sanju Samson not being there, being retired out हो गया वो। बहुत easy win था। I don't know how RR managed to get this to a super over honestly. But at the same time मेरे को ऐसा लगता है कि स्टार्क ने जो लास्ट ओवर डाला, that was actually a brilliant over, and he can handle pressure. That guy has played international cricket for so long, so only he could do that in that particular Kushagra, situation. but I think you and I were watching the match, and to give away so many runs at the death, Mm. was it not a grave mistake by Sandeep Sharma? Because look, at one stage, Delhi were not looking to make even 180. They went on to score almost 190. I think that bowling was really poor, and not bowling Jofra Archer in the super over was a really poor decision. Sandeep Sharma uh, really didn't look the part in the super over. So many loose deliveries, two slower balls, only one Yorker in the four deliveries that he bowled.
I think he pretty much gifted them and he did not show a fight in that super True. over. कुछ So बोल. Delhi go top of the table. Naman Mehta, how shocking is that? I Since mean, it's not shock. 2009. See, this may be the first time since नहीं, 2009. No, no, I'm just 2012 Top में pulling भी of the. टेबल Kushagra's. टॉप किया, I'm 2012 just में भी pulling टेबल टॉप Kushag. किया था. Don't worry, you have tabletop previously in 2020 also. I'm just pulling your leg. I just wanted to get your reaction. Thank you for that. But See, Delhi could have been 6 out of 6, is what I'm saying, Naman Mehta. correct. Correct. And see, honestly, had they not bottled that chase last time, they seem to be the most consistent team out of all the 10. और अगर बात करें कि ये पहले भी हो चुका है, आई वुड लाइक टू सी हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ. फाइनल्स तक जाओ, क्वालिफायर 1 हारो, क्वालिफायर 2 जीतो फाइनल्स में और फिर वापस हारो. सो this is what I expect the season to turn out to be for Delhi. But keeping my feelings for Delhi and their people aside, I would just like to say कि बहुत अच्छी टीम है. टचवुड दे गॉन टू विन द कंपटीशन. ऑनेस्टली आई लाइक केएल राहुल अ लॉट एंड अक्षर पटेल की कैप्टेंसी में काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने आ रही है. Firstly, I would like to commend his effort today. He came in, he was not having the best of the tournaments, and then he scored what 35 or 15 or whatever it was. But he was the game changer that Delhi needed as a captain as well as a player as well. So बहुत अच्छी जा रही है उनकी टीम एज अ यूनिट. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. कुशाग्र स्वानी थोड़ा बुरा लग रहा है 6 out of 6 हो सकता था बट नाउ इट इज 5 नहीं यार, बट यू आर मतलब स्टिल ठीक वेरी है. हम्बल एंड ग्रेटफुल कि 5 तो है 5 विन काफी है. नहीं ठीक है यार, मतलब अभी वो लास्ट गेम जो होना था वो हो गया. वो डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि रनआउट्स जो भी था, पुअर रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बट ये मैच भी दिल्ली के हाथ से जा रहा था एंड समहाउ दे पुल्ड इट बैक. सो आई एम हैप्पी. लक आई एम लक हैप्पी. इज अ फैक्टर. नो नो लक यस इज यस डेफिनेटली अ फैक्टर. यस. नमन में तो प्लीज आपको हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं है, आपका ही है. सो अरे अरे अरे, मेरे को सिर्फ एक चीज बोलनी है. 2014 में राजस्थान का एक ऐसा सिमिलर मैच हुआ था मुंबई के सामने, और हमने देखा था कि जो द वॉल है बहुत कूल रहते हैं. तो उन्होंने उठ के वो पैड चेयर. फेंक दिया था, पर आज कुछ फेंकने के लिए था नहीं शायद, तो आज उठ के उन्होंने अपनी टांग ही फेंक दी वो नकली वाली. आज वो उठ ही नहीं सकते थे ना भाई, उठ के क्या उठेंगे इसी कैसे वो. इसीलिए तो वो फेंक दिया ना. But I feel Rahul Dravid on wheelchair would have been a better batsman than Dhruv Jurel out there in the super over. सुपर ओवर तो आया ही नहीं वो, बट ठीक है उसके पहले भी. जस्ट माय थॉट्स ऑन दैट. No, we have already had this debate multiple times on this panel and this show. Dhruv Jurel, 14 crores doesn't make any sense whatsoever. He is talented, but 14 crores at that level seriously makes no sense to us. I'll just make a last question about this game. Do you think the season is over for Rajasthan, or do you see them, making some upsets and trying to sneak into the top four? नो चांस. बताइए कुछ. नो चांस. सी इफ दे कुशाग्र कंटिन्यू ने टू 2 वर्ड बैक, में समराइज नो if चांस. they continue to back Sandeep Sharma over Jofra Archer in bowling those crucial death overs, then they have no chance. As simple as that. But you think apart from that, batting is clicking and the spinners are contributing? Because see, somehow I don't see Hasaranga in the game. He comes into one match, he disappears in the next. I think that is a serious cause of concern. Naman Mehta, what do you think? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, सॉरी. No, no, I'm just saying that do you think the season is over for Rajasthan? Because batting and bowling don't seem to go hand in hand. I mean, the only thing that we can hand them this season is their exit towards the airport. और तो कुछ नहीं है. I don't expect anything else from them this season. Given that you're not sure Sanju Samson will play the remainder of the season yet, we are not sure about that too. उनके कोई batsman form में नहीं. The only thing that they can be proud about is the turnaround of Jofra Archer after the first couple of matches. और कुछ नहीं है उनके season में देखने लायक. I don't think they'll be making it to the top four. बिल्कुल नहीं. अगर वो आ गई तो भाई फिर तो दिल्ली को तो पक्का जीतना चाहिए. No, but Delhi should have made it 6 out of 6. The reason why I'm repeating this is because Delhi have given a much needed momentum to the Mumbai Indians.
जिसका मैच कल है, they are going to be playing the Sunrisers Hyderabad tomorrow at the Wankhede. And thanks to Delhi, they have given them so much confidence that I cannot believe I'm saying this. It might be an even contest because of the momentum that they carry. And certainly the batting order last time around it clicked. What do you think? It should be a high scoring match. Do you also see it as 50-50 Kushagra? सी अगर लास्ट मैच में एमआई नहीं जीती होती तो भी मैं यही बोलता कि इट इज गोइंग टू बी एन इवन कॉन्टेस्ट बिकॉज एमआई आर प्लेइंग एट वानखेड़े. They have probably made it their fortress now. And beating MI at Wankhede is not that easy. जैसे आरसीबी ने उतना इजी दिखाया, उतना इजी है नहीं उनको करेक्ट. हराना. वो मैच भी काफी क्लोज गया था. एंड it is always going to be an even contest because I'm saying this because SRH की batting has been very topsy-turvy this season as well. Despite that last match और वो पहला जो मैच उन्होंने खेला था जब उन्होंने राजस्थान को 280 रन मारे थे और पिछला मैच जो उन्होंने चेस किया उसके अलावा उनकी बैटिंग क्लिक नहीं हुई है. Ishan Kishan has not lived up to the expectations of SRH, and Travis Head has not looked that good. Abhishek also, apart from that one century, he has been very off color this season. So I believe it was always going to be an even contest. Now that Bumrah is also back, and Bumrah ने भी दो मैचेस में थोड़ा उसको गेम टाइम मिला है. So I am most excited to see how Bumrah comes into the picture tomorrow. Naman Mehta, the only question I want to ask you is, are you going to watch it from the Rohit Sharma stand tomorrow? I'll be I'll be watching it from the Vijay M stand, but I think it is exactly opposite to the Rohit Sharma stand, and Correct. I will get a view of the stand tomorrow. But more importantly, I'll get a view of the battle between the Mumbai Indians new ball bowlers and SRH batsmen. I would like to say that I would like to see the battle between Rohit Sharma and Pat Cummins, but Pat Cummins comes on to bowl in the third or the fourth over, and I don't know whether Rohit will survive until then or not. Very spot on, challenges ahead for them. If you see, I think the SRH openers can dominate somebody like a Deepak Chair. Trent Bolt obviously hasn't been in that great form, but again, he bowled those six Yorkers at the death in the match against Delhi. So he can do wonders. He's a world class bowler. And of course, you always have Jasprit Bumrah, who is known to do the best things. But who are you backing and which players are you looking at? See, I'm going to see the match tomorrow wearing a Mumbai Indians jersey, so there's no question about me not supporting Mumbai. But I think this is a sort of an eliminator tomorrow. Uh, जो भी टीम हारेगा उसका कैंपेन पूरा से डीरेल हो सकता है. So I hope that Mumbai wins, and my player to watch out for from Mumbai would be Rohit Sharma. कल उसके नाम का अगर स्टैंड इनॉग्रेट होता है कि नहीं पता नहीं जैसे भी है बट ऑब्वियसली बीइंग एन इंडियन फैन यू वांट हिम टू स्कोर रन्स एंड फ्रॉम Abhishek Sharma, I would want it to be sorry, from SRH, I would want it to be Abhishek Sharma. Honestly, I would want him to score runs on that Wankhede pitch. He'll be coming into the contest tomorrow with not the confidence from the last match, but the last international match he played at Wankhede, he also scored a century. So, Right. a lot of confidence coming into the contest tomorrow. Mr. Swani. My player to watch out for is Jasprit Bumrah from Mumbai Indians and Ishan Kishan from SRH. That's a very Okay, good pick. I really think that Ishan Kishan has a point to prove, and it's the correct. best wicket for him to bat on. But that it's conditions applied if he gets to play with the kind of form that Abhishek and Travis are in, they can play 20. They can play Correct. 20. No, no, I'm करेक्ट. just kidding. एंड He will come. और बुमराह का भी फॉर्म कुछ खास नहीं है तो मतलब हो भी सकता है. But having said that, I am looking forward for Henrik Klassen. I think Klassen on that wicket, his record is good at the Wankhede. Myself and Kushagra have seen him play South Africa versus England at the World Cup. So he definitely is a good player and best wicket to get on form. So I'm करेक्ट. looking at him and I am looking at Trent Bolt for Mumbai Indians. थिंक I don't think Naman Shah you will be joining us tomorrow. You'll be watching the match. नमन मेहता. Hopefully, अरे नमन शाह, oh shit, ये देखो कट करना पड़ेगा.
But Naman नहीं नहीं Mehta, चलेगा. I don't think we'll be able to see you tomorrow. Hopefully, I can. you will receive our video call through Yes, the yes, sure. network of Geo. But then again, it should be a cracker of a match. We are hoping Correct. for the very best. And we'll come back to you tomorrow with the review of this game and the preview of the next one. Till then, goodbye.